The next importance of planning is planning promotes innovative ideas. You have learned the feature of planning. Planning is a mental exercise, it is an intellectual process. Why it is an intellectual process? Because there is a requirement of specialized person's thinking, thoughts, which helps to make a plan. So planning requires high thinking and it is an intellectual process. New ideas are developed while preparing concrete plans. Future course of action is well thought with better ideas and better methods and procedure to achieve organizational goal. Planning requires high thinking and it is an intellectual process. So there is a great scope of finding better ideas, better methods and procedure to perform a particular job. यानी कि प्लानिंग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई थिंकिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो भी प्लान फ्रेम होगा उसकी के ऊपर बाकी सारे लोगों की या सारे डिपार्टमेंट्स के वर्किंग डिपेंड करेगी कि उन्हें क्या करना है. तो जो भी रास्ता हम फाइंड आउट करेंगे वो काफ़ी सोच समझ करके डिसाइड किया जाएगा. ठीक है. व्हेन प्लान्स आर मेड, द टॉप लेवल मैनेजमेंट्स finding the better ideas, the better method they are choosing, so the work can be accomplished in a proper manner as soon as possible. What are the different procedures are? Procedure means the steps which are using by the different departments to complete their targets. तो इस तरीके से प्लानिंग ये हेल्प करता है कि नए नए आइडियाज़ के थ्रू, नए नए मेथड्स के थ्रू हम ये फाइंड आउट करें कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा, तरीका होगा जिससे हम अपने वर्क को आसानी से अकम्प्लिश कर सकें. Planning process forces manager to think differently and assume the future conditions, so it make the manager innovative and creative, because the managers are engaged in planning process to prepare the plans for the future, not for the past. So and we know that the future are not predicted accurately, so it is depend upon the accuracy, intelligence level of the managers who prepare the plans. They create, they use their innovative techniques, their creativity to prepare the plans, so these plans will work in future perfectly and helps in achieving the organizational goal, individual goals and the departmental goals. Importance of planning is planning facilitate decision making. हाउ प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, कैसे प्लानिंग हमको डिसीजन लेने में मदद करेगी? बिकॉज प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन. एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, क्योंकि हमें पता है कि प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप्स क्या है? गोल को डिटरमाइन करना कि हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है. एंड प्रिडिक्शंस आर मेड फॉर फ्यूचर, एंड आफ्टर डिसाइडिंग द गोल we are predicting about the future, how to achieve the goals, what are the different ways which help us to achieve our predetermined goals. These predictions and goals helps the manager to take fast decision. और अगर हमें पहले से पता है कि हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, वहाँ जाने के क्या क्या रास्ते हैं, हम कौन कौन से वेज हमारे पास अवेलेबल है थ्रू विच वी आर एबल टू achieve the predetermined goal, then it is very easy for the managers to take डिसीजन. अगर हमें पहले से ही नहीं पता रहेगा कि हमें क्या गोल अचीव करना है, तो सभी इधर उधर भटकते रहेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करेंगे. सो द प्लानिंग सेट द टारगेट एंड आफ्टर सेटिंग द टारगेट मैनेजर्स प्रिडिक्ट द फ्यूचर कंडीशंस, क्या क्या हो सकती हैं. मैनेजर्स इवेलुएट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब वेज, कौन कौन से अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमें उस प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के, एंड सेलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. एंड आउट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अचीव द गोल, द मैनेजर सेलेक्ट द बेस्ट वन, take feasible decision. What is feasible decision? That is beneficial for the organization after comparing and evaluating various options. ठीक है. तो मैनेजर जो है
जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अल्टरनेटिव्स मतलब डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब वेज, तरीके, रास्ते जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, उन सारे वेज के पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट देखने के बाद द मैनेजर सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल goal. The next importance of planning is planning establishes standard for controlling. You know about the controlling. This is the last function of management we have learned in chapter 1. Controlling means comparing the actual performance with the स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, यानी कि जिसमें हम एक्चुअल वर्क को जो स्टैंडर्ड वर्क दिया गया था, जो टारगेट दिया गया था, उससे कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म किया कि नहीं, उसमें क्या कमी है, कैसे सुधारा जाए ताकि इन कमियों को फ्यूचर में आने से रोका जा सके. सो प्लानिंग, सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ द वर्क इज़ टू बी डन. तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने गोल डिसाइड किया और उस वर्क को कैसे परफॉर्म करना है उसका एक स्टैंडर्ड बना दिया. ठीक है, तो ये सारा काम प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं है. प्री डिटरमाइनिंग गोल्स और टारगेट्स विच में बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड टू कंपेयर एम्प्लॉयज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉयज़ को हमने एक टारगेट दे दिया कि आपको 1 घंटे में इतना यूनिट्स 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड. अब वो एम्प्लॉयज़ 1 घंटे में सिर्फ 45 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर पाया, तो इससे हमको क्या पता लगा कि वो एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है. ये इज़ ए इनएफिशिएंट बिकॉज इज नॉट कंप्लीटेड देयर टास्क विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम. तो इस तरीके से स्टैंडर्ड बनाया जाता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी द एक्चुअल वर्क इज़ कंपेयर विद द स्टैंडर्ड वर्क. Facilitated comparison of standard performance with actual performance to check efficiency of each department, division and individuals. तो इसी स्टैंडर्ड और एक्चुअल वर्क के कंपैरिजन से हम इस नतीजे पे पहुंच पाते हैं कि हर डिवीज़न वो एफिशिएंट है कि नहीं, डिपार्टमेंट एफिशिएंट है कि नहीं, एम्प्लॉयज़ एफिशिएंट है कि नहीं. एंड दिस planning help the manager to take corrective action in case of any deviation from set plans. Deviation means the differences, and if any deviations comes, it helps the manager to find out the deviation and the manager take the corrective action so these deviations will not come in near future. So how this planning very important, and because it set the स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड ही नहीं बनेगा देन वी आर नॉट एबल टू नो वेदर द वर्क इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. Understand the importance of planning with the help of this case study. After completing the diploma in bakery, Priya started an outlet in food court of a mall. She decided to sell 5 types of pizzas and low sugar muffins with proper planning. She was ready to face the uncertainties, and also there was no duplication of work. In short period only her business got a name in the market. Identify the points of importance of planning highlighted in above para by quoting the lines. So when you will answer the question solving this case study, you have to quote the lines on the basis of which you are able to find out the importance of planning. So from which line you are able to find out which importance. So go through the case study. You see here, she was ready to face the uncertainties. Which importance is of planning is highlighted here. Planning reduced the risk of uncertainty, and there was no duplication of work. So planning reduce overlapping and wasteful activities, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी बार बार परफॉर्म नहीं हो रही है, ना ही किसी तरह की अनसर्टिनिटी है, बिकॉज शी हैज़ वेरी वेल प्लान्ड फॉर देयर बिजनेस. सो like this you will able to solve the case studies problems, but before solving the case study you must understand each and every importance of planning.